Great morning, student. I hope you are fit and fine at your home. So today we are going to discuss part B, our part B, unit 2. Now we are going to discuss chapter 2, using keyboards, keyboard and keyboard skills. In this chapter we are going to read keyboard and keyboard skills. So in this chapter we are discussing keyboarding skills. Keyboard is a basic input device in which there are different set of keys. QWERTY keyboard is the most commonly used keyboard to enter data. So mostly जो हम यूज़ करते हैं वो QWERTY टाइप कीबोर्ड यूज़ करते हैं. So in this a standard keyboard generally has 104 keys. जब भी हम मार्केट में जाते हैं जो स्टैंडर्डली कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती हैं. टच टाइपिंग इज़ द मेथड ऑफ टाइपिंग विदाउट द यूज ऑफ साइट और सिंपली बाय फीलिंग द कीज. इसमें टच टाइपिंग कीबोर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे साइट की प्रॉब्लम होती है. सिर्फ हम सिंपली उसको टच करके फील करके उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ कीज ऑफ कीबोर्ड: अल्फ़ाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, पंचुएशन कीज एंड स्पेशल कैरेक्टर्स की. जो हमारी ऊपर की साइड होती है जो शिफ्ट के साथ यूज़ होती हैं, दैट आर द पंचुएशंस की. फंक्शन कीज F1 to F12, they are function key. Special key like Alt, Control, Space bar, that are the special key. Navigation key जो मूव करने के लिए यूज़ की जाती है, दैट आर द नेविगेशंस की. कम्बिनेशन की विच की यूज विद द हेल्प ऑफ अदर की, दैट आर द कम्बिनेशन की. सो दीज की ऑन योर आवर कीबोर्ड. टॉगल्स की, टॉगल की विच इंडिकेट द लाइट ऑन एंड ऑफ ऑप्शन. ओके, now we going to discuss function of some important keys. So these keys, these function you already know, so we are not understanding here, and these also some explanation of the keys. Now home row key. What is the home row keys? The home row key also as a home key are the row of key on the computer keyboard your finger rest on when no typing. जब आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो तो आपकी फिंगर रेस्ट पे होती है, दैट आर द होम की. स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड, द होम रो कीज फॉर योर लेफ्ट हैंड्स आर ASDFG and right hand are JKL and semicolon. So you see there, that is our keyboard and we put our finger on the keyboard. These are our home rows key. So that is our small key, small finger we write here, index finger on our that is a ring finger, middle finger, we and our thumb on the space bar, that is the rest position. So we put our hand for typing this type. Guide key. Keys F and J are called the guide keys for the left and right hand. Okay, so these are the guide key. They understand to you key where you place your hand. If you move our hand other key, then you can confuse related to these keys. So these are our fingers. Guide for the typing: it is a small vertical lines cursor which you guide to you positioning of the finger on the keyboard. So how can we put our small finger and ring finger, middle finger, index finger and thumb, where we place our fingers. So that is our placing of the key on the keyboard. Typing and deleting tags. For typing tags in a document, for typing tags, deleting tags in a document. Typing capital letters हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं? Typing and deleting tags. Typing numbers, typing symbol, punctuation marks and special characters.
ओके, सिंबल्स मीन्स आपको जो पंचुएशन मार्क्स जो शिफ्ट की हेल्प से करते हैं, दैट आर द सिंबल एंड पंचुएशन मार्क टाइपिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ. Rule for the learn typing means how which thing we learn in our mind. Use all the finger, proper position of the sitting की proper position होनी चाहिए. ये जो position है ये हमारी incorrect position है. इससे जब भी ये इससे हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी बैकबोन पे इफ़ेक्ट पड़ता है. दैट इज़ आवर राइट पोजीशन ऑफ सिटिंग. टाइपिंग एक्सरसाइज और प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए हमें. मीन्स व्हेन वी डू प्रैक्टिस रेगुलरली देन वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड ऑफ द टाइपिंग. नाउ so you can see there is some rule to learn typing. Proper posture also you are correct. Pointing devices. So what are the pointing device? Mouse, joystick, light pen. Mouse is a pointing device, joystick is a game device, light pen is a touch screen type touchpad in your laptop. We can use the touch screen, so like our phone we use as. So one by one we are going to discuss. That is a mouse, that is a wireless mouse. You can see there is no wire, and index finger and middle finger we use in our mouse, and thumb catch the body of the mouse. And when we want to left click, then we use the index finger. Okay, and if you want to context menu, then you click on right middle finger on your mouse. Mouse pointer, that is our pointer. You can see there is a pointer on screen, that is yellow color pointer. Type of the mouse: mechanical mouse, optomechanical mouse or optical mouse. Okay, now mechanical mouse, there is a rubber ball used. Optomechanical mouse, there is a laser light involved, but it look like the similar to mechanical mouse. Optical mouse, there is only sensor use. Common mouse actions: so click or left click, double click. When you want to select any item, then you click left. If you want to open any item, then you double click. If you want to context menu use, then right click. If you want to drag and drop position the icon, then you drag and drop option use. Scroll means up and down.